ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता तृतीयोऽध्याय कर्मयोग। अर्जुन उवाच जैसी चेत कर्मणा ते मत्ता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां न्योजसि केशव। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहस इव मे तदेकं वद निश्चिति येन श्रेयो अहम अपन्याम। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नद ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां न हि कर्मणाम् अनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादिव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म कृत कार्यते हि अवश्ये कर्म सर्वे प्रकृति जय गुणे कर्मेन्द्रियाणि सम्यय आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथाचारे स उच्यते। यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योगम स असक्ति से विशिष्यते। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो है अकर्मणे शरीर यात्रा पी चैते न प्रसिद्धेद कर्मणे यज्ञ अर्थात कर्मणे अनत्र लोक्यम कर्म बंधने तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगे समाचार। सहजगा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसुष्यध्वमेश्वास्तु कामधुक् देवान् भाव्यतानेन ते दिवा भवन्तु वह परस्परं भवन्ते श्रेय परमवाप्स्यात्। इष्टान् भोगानि वो दिवा दस्यन्ते यज्ञ भाविता तह दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेनैव स यज्ञशिष्टस्ने सन्तो मुचन्ते सर्वकिल विषये भुजन्ते ते तु अघं पापं ये पचन्ति आत्मकारणात् अनाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवे यगात भवति पर्जन्यो यगे कर्म समुद्भवम् कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यगे प्रतिष्ठितम् एवं परिवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयेह अद आयुन्द्र आरामे मोघम पार्थ स जीवित। यह तो आत्मरति एव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवे आत्मनेव च संतुष्टे तस्य न कार्य विद्यते न एव तस्य कृतेन अर्थो न अकृतेन हि कश्चन न च सर्वभूतेषु कश्चिद् व्यापश्य तस्मात् असक्तिस्ततं कार्यकरं समाचर। आसक्तो हि आचरणकरं परमोपनोति पुरुषे कर्मण्येव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्य लोक संग्रहमेव पश्यन् पश्यन् कर्तुम् अर्हसि यद् यद् आचरते सृष्टे तत्तत् वेत्ते जनः स यत् परमानं कुरुते लोके तदनुवर्तते। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन न अन्वाप्तं वाप्तव्यं वर्तेव च कर्मणि यदि हि अमनावर्त्यं कर्मणे यातु यत् इन्द्रिय मम वर्तमनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य उत्सीदिव मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकर से कर्ता श्याम उपनामि महाप्रजा सक्ता कर्मणि अविद्वांसे यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वानस्तथा असक्ते चिकीर्षु लोक संग्रहम न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानम कर्म संगीनां योषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ते समाचरण। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार व मूढ़ात्मा कर्ताम इति मन्यते तत्वितु महाभाव गुणकर्म विभाग्यो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृते गुणे सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृत संविद्मन्दान् कृत संवित् न विचाल्येत। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्य आध्यात्म चेतसा निराश्य निर्ममो भूत्वा युधस्व विगतस्वरे ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अंशवन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये तु एतदभ्यस्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान् तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्य अर्थेभ्यो राग विश्वस्थितो तयो न वशम् आगच्छेत् हि अस्य परिपन्थनो श्रेयं स्वधर्मो विगुण
परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरिते पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षेण बलादिव नियोजिते। श्री भगवान अनुवाच कामश क्रोधश रजोगुण समुद्भवे माशन्होमा पापमा विधेयनम इवैरिणम धूमेन आवृत्ति वहेने यथा आदर्शे मलेन च उल्बेन आवृतो गर्भो तथा तेनेदम आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणः काम रूपेण कौन्ते दुष्प्रणेन च इंद्राणि मनोबुद्धिस्थिष्ठानम् उच्यते एते विमोहिते एष ज्ञानं वृतं देहिनां तस्मात् त्वमिन्द्राणि आदुन्यमे भारतीशप पापमानं प्रजह्यनं ज्ञान विज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि प्राण आव इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसः तु परा बुद्धो यो बुद्धेः परतः तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योग नाम तृतीयोऽध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।